Okay, today we are going with the first chapter, three questions. What kind of a name is this? Obviously, there are three questions. The entire story is about the king, and the king has three questions in his mind. If he gets the perfect answer, then he will never fail in his life. And this beautiful story is written by Leo Tolstoy. Okay, so here we begin. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. What the thinking of the king is, what the king thought that about. If he has three answers, he will never fail in his life. कभी भी उसको मतलब बुरा फेस नहीं करना पड़ेगा. And the three things were, and वो तीन questions क्या थे? First question, what is the right time to begin something? कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए right time क्या है? What is the right time to start something, to begin something? And second question is, which people should he listen to? उसको किन लोगों की बात सुनना चाहिए? Okay, and the third question is, what is the most important thing for him to do? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसको उसे करना चाहिए? And because he is a king, he has lot of responsibilities, so he wants some appropriate answers of these questions. Okay, the king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. Now the king sent some messengers. उसने अपने messengers को भेजा पूरे kingdom में, by promising that he will give large sum of money, उसको अच्छा इनाम दिया जाएगा. And who is messenger? One who carries a message. Now many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Now many wise men, बहुत सारे अक्लमंद आदमी लोग आए, इंसान आए जिन्होंने अपने अपने आंसर्स बहुत डिफरेंटली बताए. All the three answers are very different according to the wise men. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. किसी ने कहा कि king को timetable बनाना चाहिए, and then follow it strictly, and then उसको strictly follow करना चाहिए. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time? Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. ये बहुत मुश्किल है एडवांस में ये डिसाइड करना कि राइट टाइम कोई भी काम करने के लिए सही है कि नहीं है, कौन सा टाइम सही है. इट इज़ वेरी हार्ड टू से इन एडवांस. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स. वो सब नोटिस कर रहा था. किंग जो है वो सारे आंसर्स नोटिस कर रहा था. एंड देयर इज़ नो राइट टाइम टू डू एनी वर्क एग्जैक्टली, एंड यू कांट डिसाइड इट बिफोर. You are supposed to do majorly focus on the situation. What situation is the so according to the situation we will decide what to do in that situation. Okay, always do whatever seem necessary that time. Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. Means after that उसको क्या समझ में आया? Yet others said that king needed a council of wise men, so he will get him that he would help him act as a proper time. Means this is the right time, you can do this work now, this is the right time, or tomorrow, or after 15 days, or means the council will decide that what is the right time and tell to the king that this is the right time, this is the proper time for this work. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. What other people are saying, that it is very impossible for one man, for a king to decide
very impossible to decide correctly, because without help from others, the right time for every action. That is important for king to have some wise man counsel to help the king, that you can't decide it alone, so we should have a group to decide the things, and we will tell to the king for the action. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. So, फिर दूसरे लोगों ने क्या कहा, there were some things which could be urgent. कुछ urgent works भी होते हैं. These things could not wait for the decision of the council. तो हम कितनी देर रुकेंगे? अगर कुछ अर्जेंसी है, देन वी कांट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, तो हमें राइट टाइम डिसाइड करने के लिए हमें फ्यूचर देखना पड़ेगा. तो फ्यूचर देखेंगे, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. फ्यूचर कौन देख सकता है? मैजिशियंस. देन द ओनली मैजिशियंस कैन डू दैट. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन. तो किंग को एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए टू लुक इनटू द फ्यूचर, एंड दे विल से दैट this is the right time to take an action, so we need magician for the king. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were most necessary. Answers are very different. Some says that we need counselors, others said priest, some said doctors, and some others said that his soldiers were the most necessary for him. And to the third question, some said science, others choose fighting, what work we should do. So the third question is, what's the third question? That which people should, what is the most important thing for him to do? What is the most important work for him to do? Some said that the science is most important, some said fighting, and yet others said religious worship. Religious worship, puja path karna important hai. So as the answers to these questions were so different, all the answers are very different, it vary person to person. The king was not satisfied. तो king को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ वो आंसर से, एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उन्होंने किसी को भी इनाम नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन hermit. Who is the hermit? What is hermit? Hermit is a person who lives alone and lead a very simple life. Okay? So now king decided to go to the hermit for to seek the advice of that hermit, and who was widely known for his wisdom. So what is wisdom? Wisdom is knowledgeable person. The hermit lived in a wood. Wood means forest, which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Because before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. What the king did here, the hermit is living in a wood, in a forest, and he never left that forest, and he is very simple man. That's why king also put some ordinary clothes and left his bodyguard, left his horse, and he went alone to the hut of the hermit. As the king came near the hermit's hut, he saw a hermit digging the ground in front of his hut. What hermit is doing there? Hermit is digging ground in front of his hut, and he greeted the king and continued digging. And again he just greet king and continued with his work. Digging means khudai karna. The hermit was old and weak, and the hermit was very old and weak, and he worked, he breathed heavily. काम करते करते हाफने लगते, he is breathing heavily. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to
answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? What king said that? King said that I have come to you, wise hermit, to ask some questions. I want to ask 3 questions. I want 3 most appropriate answers, that how can I learn to the right things at the right time? How can I learn to do the right things at the right time? And who are the people I need most? Who are the people I need most in my life? And what affairs are the most important? Affairs are the things or matters or any business that are affairs. Okay, that what is the most important affairs that I want? What is the most important thing or matters that I want to do in my life? So Hermit listened to the king but did not speak. He is busy with his work. He went on digging. Now you are tired, said the king. What king said to the hermit? That you are tired. तुम थक गए हो. Let me take the spade and work in your place. So what he said that let me take the spade and work in place of you. Thanks, said the hermit. Hermit said thanks, giving the king his spade. Then he sat down on the ground because hermit was very tired. Okay. After that, when the king had dug 2 beds, he stopped and repeated the same questions, his questions. The hermit gave no answer. Again hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, now you rest and let me work. What is beds? Bed is a small patches of ground for planting new plants. Now you rest and let me work, hermit said to the king. But the king did not give him the spade and continued to dig. And again he continued to dig. 1 hour passed. Then another 1 hour passed. The sun went down behind the trees. Now the sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, now he just stuck into the ground. And what king said? I came to you, wise man, for an answer to my questions. मुझे मेरे answers चाहिए. मैं तुम्हारे पास answers के लिए आया हूँ. I just want my answers to my questions. If you can give me no answer, tell me so. अगर तुम्हें answers नहीं देना है तो मुझे बताओ. I will return home. मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा. Here comes someone running, said the hermit. Hermit ने कहा कि यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. Now we will continue with the second part. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. वहाँ पर कोई दाढ़ी वाला इंसान आया दौड़ता हुआ, और उसके हाथ दोनों उसके स्टमक में लगे हुए थे, जहाँ से बहुत ब्लड बह रहा था, फ्लो हो रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब तक वो वहाँ पहुँचा किंग के पास, वो वहीं पर फेंट हो गया, बेहोश हो गया, कॉन्शियस, he lost his consciousness. And the king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound. What king and hermit done here? Removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. And again, फिर से किंग ने उसको redressed किया. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. जब तक कि वो bleeding stop नहीं हो गई, उसको अच्छे से cover किया, redressed किया. The man felt better and asked for something to drink. Now the man felt better और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. फिर king ने fresh water लेकर आया और उसको पीने के लिए दिया. By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. Here the hermit and the king helped a wounded man to get into the hut and laid him on the
bed to rest. The man closed his eyes and lay quiet. और वो वहाँ पर चुपचाप आंखें बंद करके लेट गया. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. और किंग भी वहाँ पर आज काम करके बहुत थक गया था, तो वो भी एक फ्लोर पे वहाँ अंदर फ्लोर पर लेटा और उसकी नींद लग गई. When he awoke, it was several minutes before he could remember. और जब वो उठा, वो इंसान उठा, तो कुछ several minutes before he could remember. What he remembered? He remembered where he was. What the king remembered here, the king remembered before some 5 or several minutes before where he was, or who the stranger bearded man lying on the bed was. And who was that? वो दाढ़ी वाला इंसान कौन है? Forgive me, said the bearded man in a weak voice. और वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो किंग से माफ़ी मांगने लगा. Forgive me. When he saw the king was awake, जब उसने देखा कि किंग जाग गए हैं, तो उसने किंग से माफ़ी मांगना शुरू किया. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और किस चीज़ के लिए माफ़ी देना है वो भी मुझे नहीं मालूम, वो भी कुछ नहीं है. You do not know me. तो वो दाढ़ी वाले इंसान ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you. लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जो मैं तुमसे बदला लेना चाहता था. Because you put my brother to death. क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था, उसको सज़ा दी थी डेथ की. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को छीन लिया था, सीज्ड किया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे पता था कि तुम उस हर्मिट को अकेले ही मिलने जाओगे, इसीलिए मैंने ये प्लानिंग की थी. आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और जब तुम लौटोगे वहाँ से घर के लिए तब हम तुमको मार डालेंगे रास्ते में. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, जब मैंने देखा कि तुम वापस नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जहाँ हम छुपे थे वो हमने जगह छोड़ दी. एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड यू हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी, तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. मैं वहाँ से कैसे तो भी एस्केप हुआ, वहाँ से भागा, उनके हाथों से बचा, और अगर तुम मुझे यहाँ पर मेरे घाव को ड्रेस नहीं करते, खून बहना बंद नहीं करते, तो शायद मैं मर गया होता. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचाई. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अगर मैं बचा, अगर मैं जिया आगे, तो मैं तुम्हारा बहुत फेथफुल, बहुत वफादार नौकर बन के रहूँगा. एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम एंड फॉरगिव मी, मैं अपने बच्चों को, अपने बेटों को भी यही काम करने बोलूँगा और मुझे माफ़ कर दो. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड. किंग बहुत खुश हुआ, कोई भी बिना एफर्ट के उसका दुश्मन आज उसका फ्रेंड बन गया. टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, उसने एक दुश्मन पर जीत हासिल की एज अ फ्रेंड, उसे ओवर हिम, ही वन हिम एज ओवर अ फ्रेंड. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. वो सिर्फ फ्रेंड ही नहीं बने, उन्होंने सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने सर्वेंट्स को भेजकर अपना खुद का डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा और प्रॉमिस किया कि मैं उसकी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूँगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. Now, वो जब लीव कर रहा था, वहाँ से वापस अपने घर जा रहा था, wounded man, leaving the wounded man, the king went out of the hut. वो hut से बाहर निकला, उन्होंने देखा कि हर्मिट कहाँ है. एंड बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, उसको अपने आंसर्स चाहिए थे जाने के पहले टू हिज क्वेश्चंस. हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स.
अब वो वहाँ पर बीज बो रहा था, जो बेड्स तैयार किए थे। एंड हैड बीन डग द डे बिफोर, जो किंग ने डग किए थे, वो जिन्होंने किंग ने तैयार किए थे वो बेड्स में, वो वहाँ पर बीज बो रहा था द डे बिफोर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, देन किंग वेंट टू द हर्मिट एंड व्हाट ही सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। क्या मैं तुमसे लास्ट टाइम अपने आंसर्स के लिए बोल सकता हूँ? जो मेरे क्वेश्चंस थे, क्या तुम मुझे उनके आंसर्स दे सकते हो? यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने क्या कहा? तुम्हें आंसर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, यू हैव, तुम्हारे पास हैं, ऑलरेडी बीन आंसर्ड। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? हाउ हैव बीन आंसर्ड? मुझे आंसर कब मिले? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुमने नहीं देखा? इफ यू नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, क्या तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आई थी कल मेरे वीकनेस पे? क्या तुमने मेरे लिए ये बेड्स में काम नहीं किया? नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, क्या तुमने डग नहीं किए ये बेड्स? क्या तुमने ये बेड्स मेरे लिए तैयार नहीं किए? You would have gone away, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, and what you wish that you have what you wished to stayed with me. So the most important time when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was your most important business. These are the three answers that you are searching for. Afterwards, when the men ran to us, the most important time was when you were caring for him. The man, the bearded man, you were caring for him. तुमने उसका कितना ध्यान रखा? Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. तुम्हें बिना फ्रेंड बने वो मर गया होता अगर तुमने उसका घाव पे पट्टी नहीं लगाई होती. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और तुमने जो उसके लिए किया वो बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट टाइम इज़ नाउ. What is our first question about the time? The time and the right time is now. हमें अभी जो करना है अभी करना है. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. अगर हम कोई भी काम कल के लिए छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, आधा घंटे के बाद करेंगे, तो उसको हमें पहले कंप्लीट करना चाहिए. पावर टू एक्ट. ओके, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, बिकॉज गया टाइम कभी भी वापस नहीं आता. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. आप जिस पर्टिकुलर मोमेंट में जिस इंसान के साथ हो वो इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट. फॉर नो वन नोज वॉट हैपन इन द फ्यूचर. किसी को नहीं मालूम फ्यूचर में क्या होगा. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स अगेन. So that person is the most important person in which you are at a particular moment. The most important business is to do that person good. अगर आप उस इंसान के लिए अच्छा कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है. Because we were sent into this world for that purpose alone. Okay, so the most important business is to do that person good, because we are sent into this world for that purpose only, to do good deeds to others. Okay, and these are the three answers that the king want, and this beautiful story was written by Leo Tolstoy.